Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Oral care in children is a critical aspect of their overall health, yet it becomes even more significant when tailored to specific needs, such as in children with epilepsy. Today, we focus on understanding the importance of oral health management in this context, highlighting the essential care practices that can make a meaningful difference. So join us. We explore this vital topic, aiming to provide clarity, guidance, and actionable insights to empower caregivers and healthcare professionals alike. Welcome, everyone. Dr. Soumya Saluja from THIP Media. And to help us understand the vital nuances of oral care in children with epilepsy, we are honored to have with us the esteemed oral health expert, Dr. Nikhil Srivastava. Dr. Nikhil Srivastava, an alumnus of the prestigious King George's Medical College, Lucknow, is a distinguished academician, clinician, researcher, and administrator. He is currently working as the Dean, Professor, and Head at the Subharti Dental College and Hospital, Subharti University, Meerut, and as an adjunct professor at Universitas Airlangga, Indonesia. A three-term member of the Dental Council of India, or DCI, Dr. Srivastava also holds notable international roles, including international advisor to the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, and a board member of the Science Committee of the International Association of Pediatric Dentistry. Sir is also an expert group member of NABH and the Bureau of Indian Standards, with over 97 publications, an age index of 24, and numerous chapters in pediatric dentistry reference books. Sir is deeply engaged in teaching, research, and clinical practice. Sir's innovation include the winged nipple for feeding cleft infants and the tube and loop space maintainer, alongside patents for biomedical waste segregation systems. Sir's global recognition includes fellowships from the Royal Colleges of Glasgow and Edinburgh, visiting scholar invitations from Indiana University, and the TC Wide Travel Grant Award. Widely traveled professional, he has participated in numerous medical and academic missions. His interests include dental trauma, child patient management, pediatric endodontics, preventive dentistry, and early orthodontics. Committed to lifelong learning, Sir actively engages in skill enhancement and knowledge sharing platforms to stay at the forefront of his field. Dr. Nikhil Srivastava, THIP Media welcomes you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Soumya. Thank you so much for your time today, sir. Sir, we all recognize that, managing oral care in children, particularly, with epilepsy, it can be a very delicate and a very challenging task. Yet many caregivers, parents, they may feel uncertain, and overwhelmed by the specific requirements of such care. So to address this and provide much needed clarity, I would like to begin this discussion with a very simple, very fundamental question that what are the unique oral health challenges that children with, epilepsy commonly face? In बच्चों में basic oral problems होती ही क्या है? Thank you, Dr. Soumya, for such a nice question. There are certain big challenges what these epileptic children face. The first one is the side effect of the medication which they are taking, right? We know about it, that they are on either on Dilantin, phenytoin, or some other drug. This causes the inflammation of the gums, जिसको हम मसूड़े सूजना कहते हैं. Now, these gums, they swell to the extent that they cover complete teeth. Okay. As a result, it's difficult for them to eat. It causes a very unaesthetic appearance also. जी. And often they bleed because when they eat, they bleed also.
So हाँ big जी problem is the gum inflammation, or we call it as gingival hyperplasia. जी Second important thing is because of the seizures. No, जी anytime seizures can happen. जी And because of the seizures, they are very prone to get the dental trauma. They just हाँ जी fall down, they just bite on the teeth, and then as a जी result, trauma also occurs. Big जी challenge to manage such children. Third जी important thing, because these children, they have very frequent episodes of seizures, जी so they become very anxious and they are very हाँ जी fearful. So it's a big challenge to treat them also, because they are very scared all the time. When they come, they are very scared. They don't want the dental treatment to be done. जी Fourth thing, these drugs, no, they cause dryness of the mouth. Now, ओके हम सब जानते हैं कि if the mouth becomes dry, तो it's prone for the ulcers. मुंह में कहीं हाँ छोटे जी छोटे से छाले हो जाना है. जी Third, because of the dryness of the mouth, the taste also get altered. तो जी उनको खाने का स्वाद नहीं आता. And ओके because of the altered taste, they just don't like to eat anything. So as a हाँ जी result, the nutritional deficiency occurs. Big राइट challenge, right? They हाँ are जी not हाँ eating, but because they are not eating, they become weak, जी nutritionally deficient. जी Another important thing which many of the parents would not know, that these anti-epileptic drugs, they interfere with the calcium metabolism of the body, ओ राइट जिसकी वजह से ना उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होती है, हाँ and the जी bone health of the oral cavity हाँ जी so is compromised. And राइट राइट because the bone health gets compromised, so it has been seen that many children have the loosened teeth. They become loose, the gums bleed, and many a times, no, you have no option but to extract them. So these are some of the very important challenges which such children they face. जी जी एंड जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इन बच्चों में ज्यादातर सीजर्स का प्रॉब्लम बहुत Hmm. फ्रीक्वेंट हो सकता Hmm. है Hmm. सो सर जाहिर बात है कि इन बच्चों में हमें बहुत फ्रीक्वेंटली डेंटल विजिट्स प्लान करनी चाहिए बिकॉज दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स राइट Hmm. Hmm. पर्टिकुलरली खा नहीं सकते हैं एंड बिल्कुल. कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इंटरफेयर होता है सो हाउ डू सीजर्स एंड देयर मैनेजमेंट impact the oral health of children with epilepsy? As I said, the same thing, no, but Caesars has a lot of problem. First and foremost is they are very, very prone for the dental trauma. Right. और उसकी वजह से तो अब मैं क्या बताऊं, जिससे हम लोग के पास जो पेशेंट्स आते हैं, many a times you see the two teeth are, fractured, one tooth जी avulsed, it has come जी out, जी right? जी So it's a big problem. It's a big challenge. The second, as I said, because of the dryness of the mouth, they very often they suffer from oral ulcers, right? It's जी a painful one. Okay, जी and they don't want to eat anything because of the pain and राइट because of the taste alterations. और हाँ इन दोनों जी की वजह से उनकी पूरी की पूरी जो फिजिक है, जो उसकी जनरल हेल्थ है, वो सारी की सारी अफेक्टेड होती है. तो ये एक हाँ बहुत जी चैलेंजेस है इसमें. हाँ जी राइट सर सो नाउ इन लाइन विद व्हाटएवर यू जस्ट सेड क्योंकि आप कह रहे हैं कि डेंटल इंजरीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं सो as a specialist what strategies can be used to prevent dental injuries during a particular seizure particularly in let's say a dental office? Yeah, see, there parents को वैसे पता होता है, लेकिन there are few things though which all parents should know. Number one and foremost is you have to stay calm. When जी the seizure starts, when the seizure occurs, एकदम से पैनिक में आने की जरूरत नहीं है. First जी and foremost thing, that you have to get yourself reassured, and also to the child, because at that time when the seizure starts, no, the child is still thinking, okay, and he is हाँ in जी panic. तो उसको जी रीअश्योर करना बहुत बहुत जरूरी है. जी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको सेफ लेकर के जाना है. सेफ का मतलब है, इफ द चाइल्ड इज स्टैंडिंग, जस्ट आस्क हिम टू लाई डाउन. एक बार ओके लेटा देना है. लेटाने के जी बाद उसको एक साइड में, करवट जिसको बोलते हैं, उस पे हाँ एक जी साइड करके एंड हेड को हमें स्टेबल कर देना है. जी स्ट्रेट नहीं रखना. जी थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड. जब सीजर्स होते हैं तो उसकी बॉडी में शेकिंग हो रही है, हाँ जी प्लीज डू नॉट होल्ड द चाइल्ड, क्योंकि उससे राइट ट्रॉमा फर्दर इंक्रीज होता है. हाँ जी हाँ जी ऑलराइट. राइट एंड राइट पेरेंट्स को बहुत केयरफुली वॉच करना है कि व्हेन इज द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज गेटिंग सीजर्स. सो व्हेन यू जी नोट डाउन, you will हाँ come to जी know that this is probably a morning hour around 11 to 12 o'clock, or before taking meal, or when he goes for a sleep. So जी you have to monitor this, and then the parents have to be very cautious during that window period. जी उसमें आपको बहुत रहना है. The child's room has to be modified.
No sharp angle should be there. And if there are sharp angles of the beds or sofas or the tables, that must be covered with some cushion. आजकल बहुत सारी चीजें आती हैं जो रबर के होते हैं, जो सिलिकॉन्स के होते हैं, आप उसको कवर करके रखिए. एंड व्हेन द सीजर अकर्स, उसके मुंह में कोई चीज आपको मुंह में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ऐसा लगता है कि द चाइल्ड इज चोकिंग. ओके, so you have to just turn the head on one side, and if it is possible, just put a cloth or a towel in between the teeth. That is the only thing you have to just keep in mind. Right. So the child safety should be the priority of any patient, any And parent. another important thing, if you find that okay, the most common time for a seizure occurring is, say for example, during school hours. So it is always better to give him a protective mouth guard. So must wear this whenever he is going to the school. Okay, so in case the seizures happens, so child's oral cavity is quite safe. Safe. Right. Right, sir. And sir, अगर यही seizure कोई बच्चा dental office में develop कर ले, क्या कोई specific oral care technique या tools आप recommend करते हैं ऐसे बच्चों के लिए? Almost same. First, the operator has to be calm. Okay. First important thing is that that is why we always train our students that whenever the patient comes, even if he requires a simple scaling, please take a detailed medical history. So many times it is also a kind of stigma that people do not like to disclose the medical conditions. Okay, वो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे खाली दांत में प्रॉब्लम है या मुंह में प्रॉब्लम है, आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए. So it is better way if you can indirectly ask the question. And the first thing, okay, कोई भी ट्रीटमेंट आपकी कोई दवा चल रही है उसके बारे में मुझे बताइए. So immediately you would come to know, okay, the child is probably epileptic. The moment you come to know the child is epileptic, then you have to take a detailed history. One. Number two, you must consult the physician or the neurologist or the pediatrician. Right? और ये हमें, we have to convince to the parents that I am not asking something which is irrelevant. I am asking for the safety of your own child before the dental treatment is started. And we sometimes, we just scare the parents also. If the moment we start the treatment and the child gets that epileptic seizure, what will happen? Then he may, his life might be in danger. So it is always better to kindly let me know the detailed thing, when the last seizure occurred, and who is the consultant physician. So if he is around, means उसी शहर में अगर है, so we can have a telephonic talk. If the child doesn't have an acute condition like pain बहुत है, swelling बहुत है, अगर ऐसी नहीं है, we can always refer the patient first to the physician or the neurologist. Just this treatment needs to be done. For example, the extraction needs to be done or pulpectomy needs to be done. Kindly give your advice. So the physician will start some pre-medication before the dental treatment is started. So ये हमें पहले काम करना. Now supposing the child has not given you complete history or you forgot to take a detailed history and during treatment seizures occur. So what you have to do? So पहला काम, you have to be very calm, composed. Immediately take the child and just, if you have a bed, then the child should lie down on the bed, otherwise on the floor. But the head must be, protected with some pillow, some cotton thing, whatever you have. Okay. And then the child should be turned on one side. Right. If possible, just put a gauge piece on the in between the teeth. Now, most of the seizures, they last less than for 2 minutes. That's all. Right. So just you have to wait for seizures to stop. Right. The moment seizures are stopped, अब child जब वो बच्चा आता है तो he is disoriented. And he is somewhat amnestic also. He doesn't remember what happened. Okay. In such condition, never ever try to, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया था तुमको, कैसे हो गया था. No, these questions should not be asked. The child should be taken in a very calm room, quiet room, where there is no loud music, there is no very sharp light, but calm and calm, and just ask him to sit for half an hour, and then you can consult the medical professional. This is how we manage such a. Right. एंड सर, जैसे आपने अभी बताया था कि जिन बच्चों को जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उनका जो डाइट है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहता है बिकॉज ऑफ द ओरल प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग थ्रू, राइट? सो व्हाट डाइटरी हैबिट्स you believe can help improve oral health in children who are fighting epilepsy, and are there any particular foods that as a specialist you would want them to avoid? Yeah, because what happens now, because
these when children the medications when they are advised, they जी are usually given the ketogenic diet. Ketogenic diet means the diet which is less in carbohydrate, more in fat. जी That means the food which is being given mostly in sticky nature, right? जी पहला काम हमको पेरेंट्स को भी बताना है कि एज फार एज पॉसिबल उसको बैलेंस डाइट देने की कोशिश करनी है, राइट? बैलेंस जी डाइट का मतलब है द डाइट विच इज रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, राइट? जी कार्बोहाइड्रेट चूंकि हम बहुत सारी मात्रा में इनको नहीं दे सकते, तो हाँ जी हाई प्रोटीन डाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग, क्योंकि वो कैल्शियम को भी रिप्लेनिश करती है। सो जी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, गुड चॉइस। हाँ जी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर किसी भी तरीके से कैल्शियम का इंटेक हम इनमें बढ़ा सकते हैं, राइट? हाँ जी हाँ जी कैल्शियम इंटेक बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे, जैसे अगर इफ द चाइल्ड इज नॉन वेजिटेरियन, हम एग को दे सकते हैं, और जी अगर वो नहीं है तो सीरियल्स को हम दे सकते हैं। हाँ जी देन जैसे मैंने बताया, ड्राई माउथ और जीरोस्टोमिया इज वन ऑफ द कॉमन कंडीशंस फॉर विच दे जी सफर। तो जी अच्छी बात ये होती है कि हाउ टू इंक्रीज द सलाइवेशन, ऑल मेजर्स शुड बी टेकन। हाँ अब जी सलाइवेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? शुगरलेस च्युइंग गम, जी गुड ऑप्शन। हाँ जी फ्रीक्वेंट सिपिंग ऑफ वाटर, उस हाँ बच्चे जी को कहीं बॉटल रखी होनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में एक एक घूंट पीते रहो, जी जिससे कि हाइड्रेशन रहे ओरल हम्म कैविटी का, राइट? जी अवॉइड गिविंग द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जी सिट्रस ड्रिंक्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हाँ जी ड्राई माउथ है, जितना हाँ आप जी एसिडिक देंगे उतना ही उनमें इरोजन और फिर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, हाँ जी जी राइट? तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो चाइल्ड सर्टेनली विल हैव। एंड रेगुलरिटी ऑफ फूड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि एड लिबिटम फीडिंग की एक आदत करा दी जाती है कि जब बच्चे को भूख लगी तब दिया, अगर बच्चे को भूख नहीं लगी तो हम कुछ हम्म सो पेरेंट्स को ये मेरी एडवाइस है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि इसको कब क्या जी देना। एंड हाँ जी थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि बहुत सारा देना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे, 3 3 घंटे पे, 3.5 घंटे पे कुछ ना कुछ इनको देते रहें। हाँ कोशिश जी करें कि स्टिकी डाइट ना देनी हो, जी कोशिश करें कि चॉकलेट जैसी चीजें ना दें, और जी ऐसी वो सारी चीजें दें जिससे कि सलाइवेशन होगा। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है, फ्रूट जूस देने के बजाय, क्योंकि हर पेरेंट को ये लगता है बच्चा मेरा वीक है तो हम मौसम्मी का जूस दिला दें, हाँ ऑरेंज। जी ये बड़ा एक इंडिया में तो हाँ बड़ा, जी तो बहुत इस कॉमन चीज को हमें प्रैक्टिस है अवॉइड करना है। हाँ जी आपको देना है तो आपको उस पूरे संतरे को दे देना है, और उसको अपने जी आप खाने को देंगे, उसमें फाइबर्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। जी सेकंड थिंग ये, आप एप्पल देते हैं, गुआवा देते हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस काट करके दे दीजिए, उसको खाने दीजिए। हाँ जी एडवांटेज क्या है कि जब इसको चबाएगा तो चबाने से उसका सलाइवेशन इंक्रीज होगा। सलाइवेशन हाँ इंक्रीज जी होगा तो उसके दो एडवांटेज हैं। एक तो ये कि जो अल्सरेशन वगैरह है वो हील होने लगेंगे। सेकेंड जी इंपॉर्टेंट चीज है, माउथ की सेल्फ क्लिनजिंग अपने आप इनिशिएट हो जाती है। जी जी और तो जो प्लाक रिमूव प्रॉब्लम, करेगा हाँ, प्लाक की या केरीज की या गम डिजीजेस जी की है, वो कम हो जाती जी जी प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी यही है ना कि बच्चा बच्चा है उसको चॉकलेट ही अच्छी लगेगी तो आई थिंक है। पेरेंट्स दे नीड टू बी वेरी स्टर्न ऑन दिस राइट जी सर फिर अब जैसे आपने अभी बोला कि जनरली अगर एपिलेप्टिक बच्चों में कोई एक्यूट कंडीशन नहीं है और अगर उनके हम कुछ अपॉइंटमेंट्स हम प्लान कर सकते हैं तो जाहिर बात है ऐसे पेरेंट्स को कुछ ध्यान बच्चों का घर पे भी रखना पड़ेगा ताकि उनका ओरल हेल्थ मेंटेन रहे जस्ट अपार्ट फ्रॉम द डाइट सो ऐसे पेरेंट्स के लिए व्हाट प्रिकॉशंस शुड दे टेक when performing daily oral care for children with epilepsy. Yes, Dr. Soumya, this is again a very good question. If the parents are listening, they must, note down all these things. जी Uh, Home care is very important. जी First and foremost, the parent should be educated enough. What is जी the importance of having a healthy oral cavity and how it जी is going to be, directly affecting the general health of the child. राइट तो एक तो ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम, उनको अगर कोई डाउट है तो उनको फ्रीक्वेंटली पूछना चाहिए कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी अब बात आती है कि कैसे हम सेल्फ केयर करें। तो सबसे अच्छी एंड सेफ एंड चीप एंड सेफ मेथड होता है टूथ ब्रशिंग। हाँ जी बट दीज चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ ट्रिगर्ड पॉइंट्स। ओके, हाँ इनके जी इनके सीजर्स जो है वो ट्रिगर होते हैं सर्टेन जी चीजों। जी तो अब इसमें क्या रिकमेंडेड क्या है? ऑलवेज आस्क द चाइल्ड टू ब्रश वाइल सिटिंग इंस्टेड ऑफ ओके स्टैंडिंग, नंबर हाँ वन। जी ठीक है नंबर टू, आपको कोई जरूरी नहीं कि आपको सुबह उठ करके ब्रश कराना है और रात में सोने से पहले कराना है। नो, जी जैसे मैंने बताया कि एक टाइम टेबल बनाएं और ये देखें कि कौन से ऐसे आवर्स हैं या विंडोज हैं जो सेंसिटिव हैं जिसमें बच्चे को सीजर होता है।
अगर हाँ बच्चे जी। को अर्ली मॉर्निंग सीजर है तो उस समय ब्रश कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उस पीरियड को अवॉइड करिए। हाँ जी। आपको पता लग जाता है 4 5 6 महीने में कि ये बच्चे को जी। सुबह 8 बजे उसको अटैक आए हैं 3 4 बार, तो दैट जी। मीन्स कि आपको यू मस्ट स्किप दैट पर्टिकुलर विंडो, जी। राइट। तो थर्ड वन इज व्हेन यू आर ब्रशिंग द चाइल्ड, प्लीज ट्राई दैट इट शुड बी सुपरवाइज ब्रशिंग। सुपरवाइज ब्रशिंग का मतलब ये होता है कि बगल में कोई एडल्ट खड़ा हुआ है और वो हाँ जी। अपने सामने देख रहा है और उसकी आंखों में ध्यान से दिखते रहे, क्योंकि इपिलेप्टिक सीजर से आने से पहले उसका फेस पूरा ब्लैंक होता है और उसके बाद अटैक होते हैं मेनी टाइम। तो जी। आपको उसको वॉच करते रहना जब वो ब्रश कर रहा है, तो उसका आप मिरर में जब वो देख रहा है और आप भी देखते रहेंगे। हाँ जी। Another important trigger point is the bristles, right? कई बार होता है हार्ड ब्रिसल जो है वो एकदम से ट्रिगर करते हैं, जी। तो पेरेंट्स हैव टू ensure that the toothbrush which the child is using is the super soft consistency, तो उसको लेकर के आना है super soft consistency का। Another important, the taste also sometimes triggers the seizures, तो ओके। आपको ये बच्चे से बनना जो उसको पसंद है, क्योंकि आजकल तो मल्टीपल फ्लेवर्स के टूथपेस्ट आते हैं, हाँ तो जी। जो बच्चे को पसंद है, अगर उसको बबल गम फ्लेवर पसंद है तो बबल गम फ्लेवर ही देना है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पेज है द फ्रॉथ जो उसके अंदर से निकलता है, जो फोम निकलता है, मेनी हाँ चिल्ड्रन जी। डोंट लाइक इट, और उससे वो जी। ट्रिगर हो जाते हैं। हम्म। So the parents have to use the toothpaste which is non foaming or less foaming। तो ठीक है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें फोम बहुत ज्यादा नहीं होता। हम्म। इतनी बातें इनको ध्यान में रखनी है, ठीक है। राइट, एंड होम आई केयर। थिंक इसमें, हाँ जी, And इसमें next one, हम्म। because because of the dry mouth, they are prone for the caries. So as राइट। much as possible, fluoridated toothpaste is to be used. So market में जी। there are n number of fluoridated toothpaste। आप कोई भी fluoridated toothpaste के साथ कराइए, फ्लेवर बच्चे की चॉइस का होना चाहिए, ठीक अल्ट्रा है। सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए, और जी। छोटे से छोटा ब्रश हो उतना ही अच्छा है। ठीक है। मैं इसमें बस एक चीज ऐड कर रही हूँ कि ये उन पेरेंट्स के लिए है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जी कौन सा टूथपेस्ट पिक करना है या कौन सा बच्चे के लिए सही है, देन दे कैन ऑलवेज आस्क देयर डेंटिस्ट, दे कैन ऑलवेज आस्क देयर डॉक्टर, चेक करवा लें एक बार। एग्जैक्टली। बिकॉज द चाइल्ड इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ मेडिकेशन प्रोग्राम, उसमें ऑलरेडी उसकी दवाइयां चल रही होंगी, तो बेटर है कि आप एक बार चेक करवा लो एंड देन प्रोबेबली दे कैन यूज द सेम थिंग्स, राइट सर? या ओके। राइट। एंड बस इसी हेल्थ लिटरेसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है इन जो कल्चरली बहुत इट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्टिग्मेटाइज्ड, राइट? सो आई थिंक ऐसे पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है that it's just a condition, a medical condition, that it can always be controlled. Right, sir? So, how does improving health literacy among parents and caregivers help in better management of the oral health of children with epilepsy? So as I said, I mean, it's very, very important, a very crucial step that the health literacy is very important for the parents if जी। they really want to take care of the child. जी। So as I said that, okay, they should know that the medication may cause the gingival or the gum inflammation. So they should जी। be prepared for that. जी। Uh, they should also be, literate enough that the importance of regular dental visit is very, very crucial. They जी। must visit every 3 to 6 months. So, normally हाँ हम लोग जी। क्या कहते हैं 6 महीने में एक बार आपको चेकअप कराना है, but जी। such children, because they are a special child, जी। so it is recommended to visit the dentist, जी। preferably a pediatric dentist if a child, if he's a child, जी। every 3 to 6 months. दे शुड ऑल्सो बी नोइंग अबाउट दिस सेल्फ एग्जामिनेशन, वो खुद कैसे कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो बिल्कुल। रिकमेंडेड कि वीक में एक बार एक टॉर्च के साथ वो बच्चे का मुंह खुलवा करके और एक बार थॉरोली एग्जामिन कर लें, एंड इफ दे फाइंड एनी स्पॉट, एनी अल्सर, एनी ब्लैक डिस्कलरेशन ऑन टू द टूथ और ऑन जी। द टंग, तो उनको इमीडिएटली रेफर करना, फिर उसको आपको 3 से 6 महीने का वेट नहीं करना। हाँ जी। दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट। तो हाँ जब जी। अगर वो विजिट करेंगे तो हम उनको रेगुलरली बताते रहते हैं कि इसमें आपको डाइट को कैसे मॉडिफिकेशन करना है। सो डाइटरी काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आर एडवाइज्ड कीटोजेनिक डाइट, तो हाँ जी। क्योंकि उनकी शुगर या कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होता है, तो वो बड़ी जल्दी ना उनके अंदर फटीग होता है, वो हाँ जी। थकने लगते हैं। जी। तो उसके लिए जैसा मैंने अभी बताया कि रेगुलर मील्स, उसका एक टाइम टेबल बनाएं कि उनको एवरी 3 आवर्स इनको थोड़े थोड़े से कि लंच कराया और 5 बजे उन्होंने थोड़ा सा एक आधा फ्रूट दे दिया, एक एप्पल दे जी। दिया,
उससे जी टुकड़े काट करके, और ये डाइटरी वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे हाँ कि जी डेफिशिएंसी ना हो। जी कैल्शियम के बारे में स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करती हैं ज्यादातर मेडिकेशंस। तो जी पेरेंट्स को, तो ऑल दीज हेल्थ लिटरेसी इज डेफिनेट एंड हैज अ डेफिनेट रोल टू प्ले इन चाइल्ड्स ओवरऑल वेलबीइंग। जी जी सर। एंड अभी जैसे हमने हेल्थ लिटरेसी की बात करी, तो क्या ऐसे कम्युनिटी या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं that focus on raising awareness about oral health care needs of children with epilepsy? Yes, certainly there are certain programs. I think एक जो है वो एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया जी है, स्पेशली फोकसिंग ऑन पेरेंट्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जी even for the dental professionals, जी not many dental professionals are very well knowledgeable how to treat such children and what should be done, because जी always treat individual like disease, जी राइट। तो वो जैसे ही आता है, अगर उसकी जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है तो हमें और कुछ नहीं बात करनी, खाली हम जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन देख करके और चले जाते हैं, या अगर उसको कैरीज है तो हम कैरीज देखते हैं। हाँ जी It is also important for people to understand this and to understand मेरी अपनी स्पेशलिटी जो है, because I was the national general secretary जी Indian Society of Pediatric and Preventive Dentistry. We also जी run a certificate program on special जी healthcare needs. So राइट there also we have a separate session for the epileptic children and how to जी manage them. जी तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम है, पेरेंट्स की अवेयरनेस के अलग हैं, एंड इवन फॉर द हेल्थ प्रोफेशनल एक अलग प्रोग्राम है। और आई एम हाँ श्योर जी कि पेरेंट्स को जरूर पता होगा, आप अगर गूगल भी करते हैं तो बड़े सारे अवेयरनेस प्रोग्राम निकल करके आते हैं, और उसमें आप किसी में भी ज्वाइन कर लें, उनमें ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं कि वो डूज एंड डोंट्स की आपको कैसे केयर करनी है बच्चों की, वो कर जी सकते हैं। एंड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए मैं इसलिए पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, बिकॉज वेन एवर आई आस्क टू समवन, how will you treat such children, so again they just take care of that thing कि ओके केरीज है तो हम ये कर देंगे, बिकॉज दे हैव जिंजाइवल प्रॉब्लम, इसलिए हम जिंजाइवा में हम ओरल प्रोफाइल एक्सेस कर देंगे, विच इज नॉट जी अ वे, राइट। राइट राइट पेशेंट मैनेजमेंट एंड उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना इज एज इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। Right. So on मैं बस इस wonderful session को एक final summarizing question के साथ में I want to simply ask sir कि parents ना who are taking care of epileptic children उनकी life में ना बहुत demanding हो जाती है, because आजकल we have working parents also. So ऐसे parents के लिए what advice would you give to them to balance the demands of epilepsy management while ensuring that their child maintains optimal oral health? So as I said that one very important thing what every patient parent should know is the communication, a regular communication with the medical professional under whom जी, your child is being treated, and very regular communication between you and the dentist, right? This जी, is जी, first and foremost important. जी, Third thing, you become the mediator between the dental surgeon and the physician, so that they are in regular contact about जी, the well-being of the child, what medications are being जी, given, which जी, medication is being stopped. So all these things must be known. So regular communication is first thing. जी, Second is the regular dental visit. हाँ जी, Please ensure that you have one pediatric dentist or dentist around your area, and जी, please be in touch with him, and जी, please make sure that every 3 to 6 months you go and visit and just show your child. Okay, if there are any problem, we will take care. As I said, हाँ the जी, professional fluoride application, you can't do it, we have to जी, do it. So जी, if the child comes, we will go for simple scaling or cleaning of the teeth, and then the fluoride is applied, so the child oral cavity is quite secured. हाँ जी, Next important thing for parents is the dietary awareness. हाँ जी, What food is to be given, they have to make the diet chart. जी, According to that, please make sure, even if you are working, some help would be there in the house. So make sure that just give a call, okay, whether your child has taken this food or not. जी, Because many a times when we are working, we are not bothered with what the children are doing. We presume जी, that okay, they are now grown up. Whenever they feel hungry, they will go and eat something. But correct, this should not happen. So every parent has to ensure that जी, the child is taking a proper balanced diet at regular जी, interval. That is हाँ important. जी, जी, Next one, every parent should ensure that your child is very properly hydrated. तो जैसे मैंने हाँ जी, बताया, because most of the drugs they cause dryness of the mouth, तो उस जी, बच्चे को
एक नॉर्मल कितना माना जाता है 2 लीटर पानी एक दिन में पीने के लिए. If the हाँ child जी, is small, we can say 1 liter or 1.5 liter. So you हाँ जी, give him a bottle, and हम्म, you must encourage your child to have a sip of water every 20 minutes, 15 minutes, जी, so that the oral cavity is properly hydrated. जी, Right? Uh, Another important thing that you have to ensure the safety period, right? So जी, the point, though the time where the child has more chances of getting the seizures, that जी, time you have to be very cautious. And if, हाँ for जी, example, as I give you example, that for हाँ example, जी, the 11 a.m. is the time where the child had seizures in last जी, 3 or 4 months, and जी, that is the time when you are in office. So you have to ensure, tell your help, इस दौरान बिल्कुल अलर्ट रहना, आसपास जी, बच्चे रहना, उसकी आंखों में देखते रहो, और कोई भी बात हो तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट एड, दैट ओके प्लीज बी काम, ask the or just make the child lie down on the floor on the bed, turn जी, the head on one side, put some cotton or some towel in between the teeth, and just wait seizures to हाँ go. जी, So जी, this is the message from my side to the parents. An important thing, if the child has that window of risk during school hours, so please visit the dentist and get हाँ the जी, protective ears or mouth guards, and the child must wear mouth guards when he is in school. राइट. तो अब इसको बहुत संक्षेप में, ओपन कम्युनिकेशन, adherence to your pediatric dentist advice, knowing about your child's seizure window and the Correct. management, of course, and mouth guards Correct. and the use of the mouth guards. Absolutely. Wonderfully put, sir. So, on that beautiful note, I really appreciate your presence with us today, sir, and I'm hoping that the enlightening information shared, it will be valuable to many families out there. So, thank you so much for joining us. It's really been a pleasure. Thank you, Dr. Soumya. Bye bye. Very nice talking to you. Thank you very Thank much. you so much, sir. Thank you. And for more such informative videos, please do subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you once again.